So, good evening, all. Let's begin with today's session. Look at the first question. Venezuela has the world's largest oil reserves. Absolutely correct. Venezuela has the world's largest proven oil reserves. Second statement says it accounts for more than 20% of the global oil production. No, that's not correct. It accounts for hardly 1% of the global oil production. So, second statement is incorrect here. The third statement says the Venezuelan crude oil can be easily processed on a sustained basis in all the Indian refineries. No, that's not correct. See, like very heavy oil. And this heavy oil can only be tackled by those refineries having the number 10 in the Nelson Sensitivity Index. Last day we talked about this. नेल्सन सेंसिटिविटी इंडेक्स तो वो रिफाइनरीज जिनके पास में जो नंबर है वो 10 एंड अबव है, सिर्फ ऐसी रिफाइनरीज इस तरह के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती हैं, नॉट बिलो देन दैट. याद होगा आपको नेल्सन सेंसिटिविटी इंडेक्स में हमने 1 से 20 नंबर्स की बात की थी. यहाँ पे 1 से 20 तक का नंबर होता है और वेनेजुएला का जो ऑयल है वो काफी ज्यादा हैवी है. तो इस तरह के हैवी ऑयल को प्रोसेस करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 10 एंड अबव नंबर की रिफाइनरीज में होती हैं और इस तरह की रिफाइनरीज भारत में सिर्फ 7 अवेलेबल हैं. Right? So, how many of these statements given above is oblique are correct? So, correct answer would be only one. Right? So, look at this one. Why we picked up this question. Venezuelan crude oil is heavy and extra heavy, requiring highly complex refineries. Not all the Indian refineries can process it easily or on a sustained basis. Now, let's move on to the next question. Question number 2. With reference to stingless bees, consider the following statements. The first statement says they are found in tropical regions across the world. Absolutely correct. In fact, they are also found in the India and Western Ghats. Second statement says honey of the stingless bees used as medicine to treat different types of illnesses. Absolutely correct. जैसे respiratory diseases हैं, inflammatory diseases हैं, इनको टैकल करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए इस तरह के हनी का इस्तेमाल होता है. Third statement is the highest number of stingless bees in the world is found in the Western Ghats. No, that's not correct. Highest number is found in the Amazon rainforest and in the Southern American region, not in India. So how many of the above statements given above is oblique are correct? So correct answer would be only 2, B for Bombay. Now look at the reason why we picked up this question. So recently an article was published in the Indian Express. It says that Amazon's stingless bees become the first insect to be granted legal rights. It was done by Peru, right? So Peru is situated in Southern American continent. तो यहाँ पे इसको legal rights मिल गए इस insect को. And in recent years, the insect has been facing threats from the climate change, forest fires and deforestation. तो कहीं ना कहीं जो legal production मिला है इससे stingless bees के conservation उनके production में help मिलेगी, right? Now let's move on to the next question. So the Reserve Bank of India supports the Indian rupee through first one is selling and buying foreign currency. Absolutely correct. See, Reserve Bank of India maintains the forex reserves, which has 4 components. The first one is the foreign currency assets, right? Foreign currency assets in terms of dollars. क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा स्टेबल करेंसी है, ज्यादा डिमांड में है. सेकंड वन इज गोल्ड एंड थर्ड वन इज एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड लास्ट वन में रिजर्व पोजीशंस विद द आईएमएफ. सी व्हाट हैपेंस, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द ग्रेटर द अवेलेबिलिटी द लेसर द वैल्यू. तो जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होगी उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी. सिमिलरली अब आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल रुपी का जो वैल्यू है वो अभी इस समय 90 रुपीज टू 91 के आसपास में ट्रेड कर रहा है. हिस्टोरिकली लो लेवल पे है अगेंस्ट डॉलर्स. अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट आरबीआई डज कि आरबीआई क्या करेगा कि डॉलर्स को ओपन मार्केट में सेल करेगा. अब क्योंकि आरबीआई अगर यहाँ पे अगर ओपन मार्केट में सेल करे डॉलर्स को तो इससे क्या होगा कि डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. अवेलेबिलिटी बढ़ने से उसकी कीमत जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी अगेंस्ट द इंडियन नेशनल रुपी. तो दिस इज हाउ आरबीआई मैनेजेस the value of Indian national rupee. So first statement is absolutely correct. अब ये सब कहाँ से होगा? By managing the forex reserves. This is equally correct. Third statement is permitting investments in corporate bonds and commercial papers from the balances in the special rupee wash through accounts. देखिए स्पेशल रुपी वॉश थ्रू अकाउंट्स जो हैं ये पर्टिकुलरली एनआरआईज के लिए ओपन किए गए हैं. अब जैसे एनआरआईज जो है उनके पास में सरप्लस कैश है, इस सरप्लस कैश का इस्तेमाल ये इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए कर सकते हैं जैसे इक्विटी में. तो अब बेसिकली व्हाट हैपेंस कि यहाँ आरबीआई ने जो फॉरेन बैंक है उनको इजाजत दे दी है कि आप एनआरआईज के लिए इस तरह के बैंक्स को आप स्टैब्लिश करिए. यहाँ पे जो ट्रेडिंग होगी वो सिर्फ इंडियन नेशनल रुपी में होगी. तो एनआरआईज जो भी सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, सेल करेंगे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ये सब किस में होंगे? ये सब इंडियन नेशनल
करेंसी में होंगे, इंडियन नेशनल रुपी में होंगे, और किस तरह के बैंक से, किस तरह के अकाउंट से होंगे, ये स्पेशल रुपी वॉच थ्रू अकाउंट्स के थ्रू होंगे. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. Correct answer would be D for Delhi 1, 2 and 3, right? And see why we picked up this question. Rupee hits the record low 90. In fact, इसके beyond जा चुका है. आगे move करेंगे हम. So question number 4. Convertibility of the rupee implies the freely permitting the conversion of rupee to the other currencies and vice versa. देखिए balance of payment में we have two accounts, current account, right? And then the capital account. इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी जो है दैट इज अलाउड, मींस आप इंडियन नेशनल रुपी को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. लेकिन कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी जो है दैट इज नॉट अलाउड. ओनली पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी जो है दैट इज अलाउड, राइट? जैसे अगर आप इंडिया में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें और अगर आप एक फॉरेन प्लेयर हैं तो आप नहीं कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, दैट इज ओनली 26%. अब एफडीआई के दो रूट्स होते हैं. पहला तो है दी ऑटोमेटिव रूट और दूसरा होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. तो ऑटोमेटिव रूट में गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहां गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? जैसे डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई इज अलाउड, वेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये ऑटोमेटिव रूट के थ्रू है. अगर 100% एफडीआई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है सो 100% एफडीआई भी अलाउड है, बट दैट इज थ्रू द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2015 में आया था, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दैट इज अलाउड बट नॉट द कंप्लीट capital account convertibility, right? Now let's move on to the next question. With reference to deposit insurance, consider the following statements. First statement says the insurance cover of rupees 5 lakh per depositor is for all the accounts held by the depositor in all the branches of the insured bank. See, there is a very famous say that never keep all your eggs in the same basket. Why? If something goes wrong, you would be losing all the eggs. तो बेसिकली आपके पास जो भी कैश है इस कैश को डाइवर्सिफाई करिए, कभी भी एक सिंगल बैंक में इसको डिपॉजिट मत करिए, राइट? व्हाई? बिकॉज लेट्स सपोज कि अगर कोई बैंक जिसमें आपका पूरा का पूरा सम अगर डिपॉजिटेड है, लेट्स सपोज आपके पास में 100 CR है और आपने किसी एक सिंगल बैंक में इसको डिपॉजिट कर रखा है, और अगर इन केस ये बैंक अगर कोलैप्स हो जाए, जो कि ऑल्दो ऐसा आसानी से होता नहीं है, बट इन केस कभी हो जाए ऐसा, तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे. वाई? क्योंकि ये मैक्स अमाउंट है जो कि इंश्योर्ड है, राइट? तो आपका जो टोटल अमाउंट है कोलैप्स हो जाएगा, सिर्फ आपको जो मिलेंगे वो है 5 लाख रुपीस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. सेकंड स्टेटमेंट इज द DICGC इंश्योर्स कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. नो, कमर्शियल बैंक्स करेक्ट है लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है. So which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be A for Ahmedabad. Only one statement is correct here, right? Why we picked up this question? There is a strong reason. Recently an article was published in the Hindu. It says that RBI board approves risk-based deposit insurance framework for the banks. So deposit insurance and credit guarantee corporation, it covers commercial banks, regional rural banks, state cooperative banks, district central cooperative banks, but it does not cover the primary cooperative societies, right? Now let's move on to the next question. So question number 6, the carbon border adjustment mechanism initially will apply to a certain number of products with a high risk of carbon leakage. Which of the following is oblique are included in the list of products? Iron and steel, aluminium, fertilizers, and hydrogen. All are included. Why? Because these are the carbon intensive sectors. See, India में अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन जिसमें बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनकी तरह ना हमारे पास में टेक्नोलॉजी है और ना ही इस तरह के इस लेवल के हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट? तो यहाँ जो प्रोडक्शन होता है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स का, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स इतने अच्छे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए कार्बन एमिशन ज्यादा होता है यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, इनको प्रोड्यूस करने में. सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है दैट इज अ मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, और ये इस तरह के सभी प्रोडक्ट्स पे टैक्स लेवी करेगा जहां पे कार्बन एमिशन जो है एक परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड हो रहा है. तो अब यहाँ पे इंडिया के केस में ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो बैडली हिट होंगे, एंड दिस मैकेनिज्म इज टू बी फुल्ली इंप्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ 2026. तो इन सभी सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है. डी फॉर दिल्ली वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है और ऑपोजिशन इसको क्रिटिसाइज कर रहा है. यू कैन सी हियर जयराम रमेश हैं, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट
एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, राइट, यूपीए के समय पे थे। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर्स intensive protection and ecological status, consider the following statements. The first one says it was launched by NTCA, National Tiger Conservation Authority, in collaboration with the Wildlife Institute of India in 2010. Absolutely correct. Second statement says it uses technologies such as GPS and GPRS and remote sensing for the field data collection and analysis. Which of these statements given above is oblique are correct? So both these statements are correct here. Both 1 and 2 would be the correct answer. Now, why we picked up this question? So there is a strong reason. Look at this one. The All India Tiger Estimation begins in Annamalai Tiger Reserve. Where is Annamalai Tiger Reserve? It is situated in Coimbatore district of Tamil Nadu, right? So it was in news recently. Now look at the next question. Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? See, rule of law is an important component of the basic structure doctrine, right? अब रूल ऑफ लॉ जो है इट वाज दिस कॉन्सेप्ट वाज डिराइव्ड बाय एवी डाइसी। एवी डाइसी जो है वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। अब एज पर दिस कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। क्लियर, मींस नो वन इज ओवर एंड अबव द लॉ ऑफ द लैंड, नीदर द गवर्नमेंट नॉर द सिटीजंस। क्लियर, सो नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, राइट, किसकी सुप्रीमेसी है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकंड थिंग इज the equality before law. The third one is the liberty and the civil rights. See, liberty and civil rights. अब लिबर्टी एंड सिविल राइट्स को इंडिया में या किसी भी कंट्री में प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का काम है। अब अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? द आंसर इज नो। तो अल्टीमेटली जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। Third one is incorrect here. It is highly irrelevant. People's responsibility to the government. No, that's highly irrelevant. तो correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 2 and 4 would be the correct answer. ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये, आई गेस 2015 में आया था ये, राइट? सो एवी डायसीज रूल ऑफ लॉ थ्योरी from his 1885 book, The Law and the Constitution, it posits that government power should be limited by law, not arbitrary will, resting on three core principles. So, supremacy of law, equality before law, and predominance of the legal spirit. Now, let's move on to the next question. So, look at the next question, question number 9. With reference to Mayon volcano, consider the following statements. The first one is, it is an active stratovolcano located in the Luzon Island of Philippines. Absolutely correct. Second statement is, it forms the part of the Pacific Ring of Fire, which is highly volatile in nature. Again correct. Third statement is, it is the Philippines' most active volcano. Again correct. It is called the world's most perfect volcanic cone due to the symmetry of its shape. Again correct. So question is, which of these statements given above is oblique are correct? So all these statements are correct here. C for Calcutta, 1, 2, 3 and 4, all these statements are correct here. Right? Why we picked up this question? There is a strong reason. Recently, the government of Philippines evacuated more than 3,000 people. Why? Because this volcano erupted. Clear? Next question. So, दोस्तों, it is going to be the last question of today's session. Which of the following countries is not a part of the Weimar Triangle? See, Weimar Triangle में all countries are included here except Italy. So Italy is odd man out. France, Germany, and Poland, all the countries are the part of the Weimar Triangle. Right? Look at the map first. Why we picked up this question. So first of all, this is the Weimar Triangle, France, then Germany, and then Poland. Clear? So recently Poland and these countries, Germany and France, so Weimar countries, they supported India against the Americans' hegemony. अब अमेरिका ने यहाँ पे थ्रेट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने that Donald Trump may slap 500% tariffs on the Russian oil purchased by India. Right? तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं. So look at this one, why we picked up this MCQ. So first of all, Weimar Triangle is a regional political grouping of France, Germany, and Poland. Italy is not a member, and this grouping was set up in 1991. So look at this one. Poland backs India amid Donald Trump's tariff threat over Russian oil imports. Right? So this was the reason we picked up this question. I hope you guys like this session. उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये सेशंस लाइक कर रहे हैं. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कोशिश करिए कि ये सेशंस जो है वो आपके साथियों तक, आपके कंपेनियंस तक के पहुंचे, वो सभी साथी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस दैट दीज सेशंस आर गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर ऑल दी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. आई एम टेलिंग यू, जब एग्जाम खत्म होगा आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया और क्या ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल थे या नहीं. चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.